4 साल से। दोस्तों, आज तेलंगाना विधानसभा के अंदर रेवंत रेड्डी सरकार के सामने एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ज़बरदस्त हंगामा किया है। मीडिया अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान को हिंदुओं के खिलाफ सुना और दिखा रही है, यानी कि मीडिया को गरम मसाला मिल गया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने बयानों में क्या कुछ बोले हैं, आप लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आगे पूरा सुनिए। साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ एक बहुत अहम मसले पर, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है, एससी स्टूडेंट्स का है, एसटी का है और बीसी स्टूडेंट्स का भी है सर। और ये मसला है फीस रियम्बर्समेंट का सर। एमटीएफ, आरटीएफ, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 4 साल से बच्चों की फीस आई नहीं है सर, और उसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान है बल्कि कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है। कि अगर आप देखेंगे सर, हर साल करीब 7 लाख, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स get enrolled for the fees reimbursement under MTF and RTF, pre-matric and post-matric, sir. For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship. Their certificates are not being getting released, and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates अगर release कर देते हैं तो सवाल ये है सर कि managements कैसा चलाएंगे? A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong. 20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 lakh students suffer कर रहे हैं, SC, ST, BCs, minorities. और न सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट सफर कर रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 4 लाख टीचिंग स्टाफ is not getting the salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. So it is such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money. They are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir. They are availing loans, and it has been more than 1 year. Not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarship, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. Sir, 5 लाख रुपये लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपये रिलीज किया जा रहा है। सर, आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5 लाख रुपये लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते। सर, ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इश्यू है सर कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर। उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है। सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए। आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए। इतना बर्निंग इशू है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन। No sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please do not forget, sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab.
and it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer. नहीं ये backlogs है. TRS government 4 साल का छोड़कर गई. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement. Sir, the students are suffering. If not, sir, I want to come and record and say that. I want to come and record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student so that the student do not suffer, sir. Thank you, sir. Speaker, sir. The seriousness of the subject is a genuine one, is being noted, and I will speak to the concerned minister. I know, because for whatever the cause, whatever the reason, definitely, whatever he says is Sir, right. till last It year it was deserves. 5,000 crores, sir. Now it has gone to 8,000 crores, sir. 8,000 crores are due, sir. So it's a genuine demand which is being noted. I will take it to the concerned minister, sir. 100%. Thank you, sir. The suicide of students in the state of Telangana is 3 times more than the farmers of the Telangana, sir. So now we are just pushing them to commit suicide, sir. See, sir, I have the figure, sir. 5,020 crores are due, and if we calculate this year, sir, it will come to almost